अस्सलामुअलैकुम। मैट्रिसेस में मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड होके उसके बाद आप कुछ करेगा। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस कंप्लीटेड इन मैट्रिसेस? सर एक लास्ट प्रॉब्लम बचा हुआ है, वो करेंगे बोले थे आप। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, I think third one is A inverse equal to adjoint A by det A problem theorem. Next, yeah, speak ma till where we finished. So can you name the student who is sending me PDF? Kazim sir is also asking who is it. In second year Nadeem is there. What about first year? Who? Abdul Rahman. रहमान खान। Okay. Abdul Rahman, thoda properly screenshots PDF में भेजते हो. Yes, sir. Okay, now let us start with the next problem. I think I have done A inverse equal to adjoint A by det A. After that, all the functions are done, na? फिफ्थ वाला करना है सर। फिफ्थ वाला नहीं होता। 1 2 3 4 5 हो गए। सिक्स्थ वाला करना है ना, प्रॉब्लम नंबर 6। ये इनवर्स इक्वल टू a क्यूब हो गया क्या? लास्ट सम क्या क्या करे पड़ा जरा, लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा करे जरा पढ़ो। a inverse equals to a cube कर रहे थे सर। a इनवर्स इक्वल टू a क्यूब हो गया ना? हाँ हो गया सर। हो गया सर। मैट्रिक्स 7 मार्क्स। सिक्स्थ वन, a equal to -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1. Prove that adjoint A equal to 3A transpose and find A inverse. Adjoint A equal to 3A transpose and find A inverse. Shall we start? So you know how to find out adjoint A. A equal to -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1. How to get adjoint A? Let us find out det A also. -1 into 1 -4 plus 2 into 2 plus 4 -2 into -4 -2 -1 into -3 2 into 6 -2 into -6 3 plus 12 plus 12 27. Adjoint A बोलो. It's a matrix of this.
Yeah, you are unmuted. Please speak out. Maybe what should I write in the first bracket? 1 minus 4. For the second element, removing row and column. ये चार element रहेंगे. Cross multiply. 2 plus 4. You are selecting row, but you are going to write transpose, isn't it? Of this element, removing row and column. -4, -2. What say है first row? First row completed. Cofactors of first column. Sorry, first row's cofactors written as first column. बात करो. जी सर. Okay, now second row को जा रहे हैं. Second row का element देखो. Row and column if you remove -2, -4 आता. -2, -4. Now this element -1 plus 2. And this element removing row and column 2 plus 4. And last row. Okay, 4 plus 2. And this removing row and column 2 plus 4. And the last -1 plus 4. Adjoint A is ready. -3, 6. -6, 3, -6. Minus, -6, -6, 3. This is adjoint A. 1. 3A transpose you have to find out. 3 into A transpose. A transpose को तो इसका ट्रांसपोज लिखना है. रो को कॉलम में जैसा. मल्टीप्लाई करो 3 से. And you can see they are equal now. From 1 and 2. Adjoint A equal to 3A transpose. ये दो equal है. You have to find out A inverse finally. A inverse formula. Adjoint A पे 28. Now 38 is 27. -3, 6, 6. -6, 3, -6. -6, -6, 3. Now, divide every element with 27. 3 9s are 3 2s and 3 9s. -2 by 9 minus 3 1s and 3 9s, 1 by 9. -2 by 9, -2 by 9, -2 by 9, and 1 by 9. Okay, that's the end of the problem. Will you take the screenshot? अब्दुल रहमान ले लिए सर, ले लिए. ले लिए. Seventh problem. Okay, is the last of this kind, with which 7 marks will be completed. If A equal to 0 1 1 1 0 1 1 1 0, B equal to 1 by 2 into B plus C, C minus A, B minus C, C minus B, C plus A minus B, B minus C, A minus C, A plus B. Show that AB A inverse is a diagonal matrix. That is the next problem. Is a diagonal matrix. What is a diagonal matrix? अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल 0 0 रहते हैं.
ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स आता रिजल्ट आता देखेंगे क्या हो सकता वो। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करना। ए बी क्या है, ए इनटू बी फर्स्ट एंड देन ए इनवर्स, दो करके अलग अलग दोनों को मल्टीप्लाई करना। पहले ए बी 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ए बी, ए इनटू बी हाफ इनटू b plus c, c minus a, b minus a, c minus b, c plus a minus b, b minus c, a minus c, a plus b. Multiply. Write half here. Write half here. Multiplication बोलना. Go and column. 0 into b plus c 0, 1 into c minus b, फिर 1 into b minus c. First one into second column 0 plus b plus a minus c. First one in the third column 0 plus a minus b plus a plus b. Second row b plus c into 1 0 b minus c, c minus a plus 0 plus a minus c, b minus a plus 0 plus a plus b. I hope you know multiplication very well. Third row column B minus A. 0. Second c minus a, c plus a 0, b minus a minus b 0. क्या बचा बोलते हैं हाफ इंटू, यहाँ पर b एंड c दोनों कैंसिल 0, यहाँ पर c कैंसिल 2a, ये b कैंसिल 2a, यहाँ पर c कैंसिल 2b, a एंड c कैंसिल 0, 0. a कैंसिल 2b, 2C. b कैंसिल 2c, a कैंसिल 2c, all cancel 0. So 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 ये b 0 b c 0. Finally that is ab. Now let us find out a inverse. a inverse के लिए आपको मालूम है क्या क्या करना है। a inverse के लिए you have to find out get a first. 0 into 0 minus 1 minus 1 into 0 minus 1 plus 1 into 1 minus 0, which is 0 plus 1 plus 1, that is 2. Let a find करा 2 आया। Adjoint a find करना, adjoint a brackets of this plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Each element का cofactor, if you put column 0 minus 1, the second element if you put column 0 minus 1, 1 minus 0. Next, a second row का removing column 0 minus 1, 0 minus 1, and this 0 minus 1. Last row का 1 minus 0, 0 minus 1, 0 minus 1. Okay, and it is equal to minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. Then what is a inverse? Adjoint a by get a. Get a 2, so 1 by 2 into minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. A inverse. सुन रहे हैं Sir, ना? we can also find it out by A into A inverse equal to I. By that also we can find, no sir. into A inverse करने ये और A inverse बाजू बाजू में नहीं है। A into A inverse करने के लिए आप A and A inverse should be consecutive, बाजू बाजू में रहना, और मैट्रिसेस में उल्टा नहीं कर सकते। A B B are not equal. Yes, Now sir. A B A inverse अभी मल्टीप्लाई करोगे, A B क्या है? 0 A E 0 E C 0. A B लिख दिया। A inverse is 1 by 2 into minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. So I just multiplied them. The multiplication, keep half as it is,
Multiply this to go to column 0 plus a plus a. First one to second column 0 minus a plus a. First one to third column 0 plus a minus a. Now in the second row, first column minus b plus 0 plus b. Second b minus 0 plus b. Second one and third column b plus 0 minus b. Third one first column minus c plus c plus 0. Third one second column c minus c plus 0. C plus c minus 0. What is it for? 2a is 0 0. 0 2b 0 0 0 2c. If you divide each element a 0 0 0 b 0 0 0 c bacha, it is diagonal matrix. So diagonal matrix means you find non-zero elements along the principal diagonal only, remaining all elements are zeros. Which is a diagonal matrix? That is the answer. And that is the end of LAQs of matrices. I have to start SAQs of matrices now. Take the screenshot first. Screenshot. Over. Abdul Rahman. हो गया सर, हो गया सर. Sir, first SAQs of functions, sir. Functions completed. SAQs. फंक्शंस SAQs नहीं हुए सर, खाली एक SAQs given और odd करा है. SAQs नहीं है मां, only VSAQs and LAQs in functions. अच्छा. Next doubt. अब्दुल रहमान से बात कर रहा हूँ. हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया सर. Okay. To the side SAQs. But my plan is to complete all of LAQs and then go to SAQs, isn't it? I told you in the beginning. याद है ना? So, in order that we have completed functions LAQs, matrices LAQs. Total 4 LAQs हो गए. एक function से आता, 3 matrices से आते, total 4 LAQs हो गए. फिफ्थ वाला एक और LAQ और एक चैप्टर का करेंगे. सर डाउट है सर, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है सर? क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक बार देखो ना कैसा है. नया वाला सर. अब मैं बोले तो फिर भूल जाते. जब बोल, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न सर दूसरा और एक LAQ कौन से लेसन का करा रहे सर? कराएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे. वेक्टर अलजेब्रा हो गया ना शर्मा सर के क्लास में? नहीं सर, अभी थोड़ा है सर. एडिशन हो गया सर. एडिशन हो गया सर. एडिशन हो गया सर. थोड़ा बाकी है सर. प्रोडक्ट बाकी है थोड़ा. हाँ वही एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो हो गया ना? जी हो सर. गया सर. हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया. और ट्रिग्नोमेट्री कहां तक हुआ? हो गया सर. पूरा हो गया सर. वो खाली कैलकुलस बाकी है और वो बाकी है. ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे. जी सर. अब ट्रिग्नोमेट्री क्या करा रहे सर? LAQs. LAQs. This is the 5th 7 marks question. First problem. If ABC are angles of triangle, if ABC are angles of triangle, prove that sin 2A plus sin 2B minus sin 2C equal to 4 cos A cos B sin C. These are transformations which use some formula in transformations. I hope you know sin C plus sin D, sin C minus sin D, cos C plus cos B, cos C Yes, minus cos. मालूम है ना? जी सर. Yes, sir. ABC angles of triangle means
A plus B plus C 180. Equal to 180. LHS sin 2A plus sin 2B minus sin 2C. So the first two, if you consider, it's like sin C plus sin D. Yes, sir. What is 2 the formula sin. of sin D plus Sin A sin D? plus B into sin A. 2 sin C plus C D plus by D 2 cos Of 3 C minus minus D D by by 2. Formula of sin C plus sin D. So यहाँ क्या yes, लिखना? 2 sin A A C plus plus B. D by 2. 2A plus 2B by plus 2. 2B. A plus B लिखते हैं. A plus B. Cos C minus D by 2 minus. I hope you know sin 2C formula. 2 sin C cos C. Yes, sir. ये दो फॉर्मूलास मैं यूज कर दिया. A plus B को 180 minus C लिखते हैं. A plus B is 180 minus C. 180 minus C which quadrant? Second. 180 minus theta. Second quadrant. Second quadrant side is positive. Sin. Yes, sir. So you will get sin C only. Isn't it? Yes, sir. 2 sin से कॉमन निकाल लेना सर. क्या बोलते हैं? sin 180 minus theta sin theta. जी सर. 2 sin C common. Cos of A minus B minus cos. 2 sin C common आया. cos C को A minus B लिख. Sin C cos A minus B minus cos 180 minus A plus B ना. जी सर. Yes, sir. Can be written as 180 minus. Any 180 minus is second quadrant. Second quadrant cos is negative. Yes. Second quadrant cos is negative. Sin positive but cos negative. So 2 sin C into cos of A minus B negative लिखते जब ये minus plus होता. Cos of A plus B. What is the formula of cos A B. bracket here? 2 cos A B. Negative. 2 cos A B. A plus B plus cos A minus B क्या है? 2 cos A B सर. Suppose you don't know that formula, then see the answer and adjust that bracket. Answer में sin C आ गया, answer में 4 का 2 आ गया, तो और Cos A कितना cos है B. जो आपको पता वो लिख दो. 2 into cos A cos B. Cos B, as you said. That's the reason it is 4 cos A cos B sin C. That is RHS. Repeat the second problem also. Same way, we'll do one problem in cos. Terms of cos, look at it. A plus B plus C 180. We have to prove that cos 2A plus cos 2B plus cos 2C. Cos 2A plus cos 2B plus cos 2C equal to minus 1 minus 4 cos A cos B cos C. ये सब करेंगे सेम मेथड. Yes, sir. Elements cos 2A plus cos 2B plus cos 2C. ये दो नहीं है. They look like cos C plus cos D. Yes, sir. Is the board clear for you? जी सर क्लियर है सर. Clear है, sir. आपके बाद दूसरा कुछ रहा था ना जो बात कर रहे हैं. कुछ मैसेज करके देखो ना. ओके. cos C plus cos D. 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2 will come, right? Cos 2C. A plus B can be written as 180 minus C. Cos of A minus B plus cos 2C. अब ये cos 180 minus C second quadrant. Second quadrant cos negative. So you get minus 2 cos C. समझ रहे हैं? रेशियो सेम आता. 180 को sin ही चलता, cos को cos ही चलता. 90 है तो sin cos होगा, cos sin होगा. अब important is
what to take this cos 2c as a formula? I will write here cos 2c is two formulas. 2 cos square c minus 1 लिखे 1 minus 2 sin square c लिखे. अब बोलो ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सूट होता? 2 cos square c minus आंसर में cos c दिख रहा, आंसर में cos c दिख रहा. So take the formula of cos terms. 2 cos square c minus 1. समझ में आया? yes sir 2 cos c Minus 2 common cos c कॉमन. क्या रहता बोलो? cos a minus b माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस माइनस होता cos c होता. देखिए माइनस नहीं प्लस होता, माइनस 50 माइनस में माइनस, then it is going to be plus. What next? I just want you to compare. Rep के आवाज अटकरी. Yes, cos of a minus b minus cos of c Minus is b. equal to b minus 1 minus 2 cos c into cos of a minus b. Again it is second quadrant. Second quadrant cos is negative, so minus will become plus. plus cos cos is. a plus अब b आप बोलो ब्रैकेट में क्या लिखते तो आंसर आता वो लिखते रहे. Don't even think of formula. Think of what is to be written in the bracket to get the answer. 2 Already cos a in the cos b answer we have cos c and minus 2. So what should I write more? 2 cos a cos b. Agree? yes sir So minus 4 cos a cos b cos c minus minus 1. That is the answer. So 7 marks questions are on board. Take the screenshot. Done, sir. सर आप पूरे लेक्चर्स का एक पीडीएफ बना के भेज सकते हैं सर. मैं मेरे बारे में बोल रही मैं नहीं जो नहीं, बना रहे सर। सर आप पूरे लेक्चर्स का बना के भेज सकते हैं सर. आप पूरे लेक्चर्स आप एक भेज देना, मैं भेज रहा हूं. जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो वो भेज सकते हैं सर पूरे एक साथ बना के. हाँ हाँ भेजते ना, अब्दुल रहमान भेजते होंगे ना, बोले ना. करेक्ट है. पूरे लेक्चर सर. पूरे एलएक्यूज पूरे पूरे एलएक्यूज नहीं, पूरा नोट्स आज का नोट्स पूरा पीडीएफ बना के उन लोग भेजते हैं. भेज देता हूं. लिखना है, प्रैक्टिस करना है आपके बच्चे. फिनिश्ड ना स्क्रीनशॉट. Yes, sir. Okay, I'll go with the next problem. Third problem. Third problem. Third problem, a plus b plus c by d. We have to prove that sin a plus sin b minus sin c equal to 4 sin a by 2 sin b by 2, 4 sin a by 2 sin b by 2 cos c by 2. Okay, ma? Is it it? Right? LHS. LHS देखो sin a plus sin b minus sin c. It is like sin c plus sin b. Formula. yes sir Sin c plus b by a 2. plus b A by plus 2 b by 2 cos c a minus minus b b by 2 by 2 minus sin c is 2 sin c by 2 cos c by 2 multiple and some multiple angles के लिए some multiple angles का formula है. Sin c formula 2 sin c by 2 cos c by 2. Okay, yes sir इसको डिवाइड बाय 2 करें तो a plus b by 2 plus c by 2 is going to be 90. When you divide by 2 what will be a plus b by 2? 90 minus c by 2. I want your response please.
रेस्पॉन्स देगा, नहीं तो वीडियो सॉल्व करना पड़ता। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 minus means first quadrant. First Positive, sir. quadrant All. में all are positive, है Yes, नहीं? sir. All are positive. Yes, sir. But 90 sign will become cos, correct है? Cos हो जाता है. Yes, sir. 2 cos C 2 by cos 2. b by 2 होगा, फिर cos a minus b by 2 minus 2 sin c by 2 cos c by 2. 2 cos c by 2 common, cos a Cos minus out b by जाएगा. 2 minus sin Minus. c by 2 left. Yes, sir. Cos c by 2 cos a minus b by 2 minus sin c by 2 can be written as 180 minus A plus B by 2. Sorry, 90 minus A plus B by 2. again 2 cos c by 2 cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2. B by 2. Now tell me what should I write in the bracket to get the answer. You see the balance to be written in the answer to get the answer. 2 sin A by 2, sin B by 2. That is the formula. समझ में आया ना technique of writing the answer? You need not know the formula. Directly you can write 2 sin A by 2 sin B by 2. Without even remembering the formula, just see the answer of the problem. According to answer, you can adjust it. So 4 sin A by 2 sin B by 2 cos C by 2 RHS. Any doubt in this? क्या बोलते हैं? एक्टिव रहना एक तो भी क्लास में। जी सर क्लियर है सर। A plus B plus C 180. Let's see what happens if it is cos A plus cos B plus cos C. Cos A plus cos B plus cos C is going to be, 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. टाइम कितना बच गया है देखो, 3 मिनट है। अभी है सर, अभी एक प्रॉब्लम हो जाता। cos A plus cos B plus cos C, ये दो एक जगह 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2 Yes, plus sir. cos B. Then A plus B by 2 you can write as 90 minus C by 2 cos A minus B by 2 plus cos C. 90 minus is first quadrant becomes sin 2 sin C C by by 2 cos A minus B by 2 plus cos C. Now you observe this is in terms of sin. Also 1 answer will be minus 2 also sin. in terms of sin C by 2. So we write 1 minus 2 sin 2 square C sin by 2. square C by 2. That was the formula. And this one here 2 sin C by 2 common cos A minus B by 2 minus sin C by 2. फिर C by 2 के जगह 90 minus बोल के लिख के कर देना। A minus B by 2 minus sin C by 2 is 90 minus A plus B by 2. एक स्क्रीनशॉट ले लेना था, टाइम है कि नहीं करने वाला। 5 मिनट है सर अभी। A minus B by 2 minus cos A plus B by 2. Yes, sir. देखो फिर इसका क्या लिखे तो अपना प्रॉब्लम आंसर आता देख के वो इधर लिख 2 देना। sin A by 2 sin B by 2. 4 2 बाकी के दो क्या है sin A by 2 sin B by 2. So finally it is 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. That is RHS. Now take the screenshot now. डन So सर। today I have taught 6 problems, 2 in matrices you have seen and 4 in transformations. This class will continue next. ले लिए screenshot ले लिए? ले लिए सर। Okay, send me PDF now.
send the PDF. Jazakallah. Thank you. Allah Hafiz. Jazakallah khair. Yeah.